This conference will now be recorded. ओके सो हम जो आज करने जा रहे हैं दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग का भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब अरेंजमेंट्स इज नॉट ओनली अबाउट अरेंजमेंट्स। इस जो आज की क्लास है दिस विल हेल्प यू इन लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजंस, डबल लाइनअप एंड ऑल दोज स्टफ। ठीक है, तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बेसिक्स ये हर चीज का बना देती है। तो सबसे पहले तो एलआर के बारे में जो चीज फेमस है, द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट के लिए जो चीज फेमस है दैट इज कि ये किसी को सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो नो वन कैन, ये तुम्हारे साथ भी होता होगा कि हमने यार जिन लोगों ने पहले कोचिंग कर रखी है या प्रीवियस ईयर कैट दे चुके हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि यार लॉजिक एलआर की क्लासेस तो हमने काफी अटेंड करी है, एलआर में हमने काफी मेहनत कर ली, लेकिन समझ में नहीं आता सेट अगर नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आज की क्लास का नाम है डिकोडिंग द स्टेटमेंट। तो हमें जो सबसे पहले सीखना चाहिए वो है कि एक स्टेटमेंट अगर आपको दी है तो उसका क्या क्या मतलब हो सकता है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इवन जब मैं अपना कैट लिख रहा था और जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो पहले मुझे एलआर लाइक वाज अ नाइटमेयर फॉर मी। और दिक्कत क्या थी, धीरे धीरे करके आ गई। और दिक्कत क्या थी एलआर में, सिर्फ ये दिक्कत थी कि स्टेटमेंट को आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो। जैसे कि जिन लोगों ने पहले कैट दिया उन लोगों ने देखा होगा कि फैकल्टीज जब क्लास के अंदर कराते हैं या फिर इवन जो अभी कर रहे हैं और जिन्होंने हमारी कुछ एलआरडीआई की या तो यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं या फिर क्लास के अंदर अटेंड करी है प्रीवियस क्लासेस में, तो उनको ये पता होगा कि यार जब हम कराते हैं तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम तुम खुद से प्रैक्टिस करते हो तब वो होता नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है, वेयर इज द गैप? तो वो जो गैप है दैट फाइन दैट माइन्यूट गैप इज जस्ट बिटवीन लाइक व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग द स्टेटमेंट। तो दो चीजें होती हैं, या तो आप स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेट करते हो, तो इसमें कुछ बच्चे जो है पहले ही थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार नहीं यार इंग्लिश तो आती है तो गलत इंटरप्रेट तो नहीं करेंगे। ऑल राइट, तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स डज नॉट इंटरप्रेट अ स्टेटमेंट रॉन्ग। व्हाट व्हाट इज द थिंग इज दैट यू इंटरप्रेट द स्टेटमेंट हाफ। तो एक स्टेटमेंट के जितने मतलब हो सकते थे, ठीक है, वो हम सारे नहीं निकाल पाते। हम क्या करते हैं उसके कुछ ही मतलब जैसे मान लो एक स्टेटमेंट से अगर 5 पॉसिबल केसेस हैं, तो हम 5 पॉसिबल केसेस नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बस 4 पॉसिबल केस बना पाएंगे, हम बस 3 पॉसिबल केस बना पाएंगे। तो what we are going to learn in today's class is how to interpret those statements। तो अरेंजमेंट की वैसे क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास के अंदर ऐसा भी हो सकता था कि मैं 4 सेट उठाऊं, मैंने 4 LRDI के सेट उठाए, मैं तुम्हें सॉल्व करने का टाइम दूं, फिर मैं खुद सॉल्व कर दूं और तुम्हें करके दिखा दूं, तुम्हें समझ आ जाता। पर वो चीज हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने वो 4 सेट तुम्हें करके दिखाया, तुम्हें 4 सेट अभी समझ में आ गए, 3 दिन बाद वो भी भूल जाओगे। और उसके अलावा जब पांचवा कोई सेट आ जाएगा तो कैसे करोगे? तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड और व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू बिल्ड टुडे इज दैट इंटरप्रिटेशन स्किल, कि एक एक स्टेटमेंट से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हम आज की क्लास में डेवलप करेंगे। सो how the class is going to be, first of all we will not be targeting any particular LRDI set। हम अरेंजमेंट का कोई पर्टिकुलर सेट नहीं करेंगे, लेकिन द टारगेट इज कि क्लास के बाद आप कोई भी LRDI का सेट करने के सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, आप आत्मनिर्भर तुम बन जाओ आफ्टर द क्लास। तो हम जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं इन द एग्जाम, ठीक है, हम एक एक स्टेटमेंट को बारी बारी से उठाएंगे और हर एक स्टेटमेंट का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, या फिर उसके कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सो यस देयर विल बी क्वेश्चंस, स्मॉल क्वेश्चंस ऑन अ सिंगल लाइनर, सिंगल पॉइंटर स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, तो वी विल बी टारगेटिंग इट लाइक दैट। ठीक है, सो इफ यू गाइज आर विद मी एंड इतना फॉलो अप कर चुके हो तो just give a thumbs up, we will start now। Okay, Karthik is asking how much time we should give it to for a set। So Karthik, like if I tell you, when I do go and I myself go and give cat exams, right? So there are particular sets that I am able to solve and crack in like 5 minutes. There are sets which takes me around like 15 or
maybe between 15 to 20 minutes also. But the thumb rule that I follow is that if in is first 3-4 minutes, if I'm not able to draw the first outcome of from the set, if I'm not able to understand the set in the first 3-4 minutes, then I do leave it, right? So there is not a particular marking that you should be giving this much time. Yes, but obviously you should not be wasting like 30-40 minutes on a set. But while you are practicing, like if I just say that now you are starting with that, right? Now you are starting with your logical reasoning preparation. So do not focus on what how much time you are taking to solve a set, but focus on if you are able to conclude the set correctly, even if it takes like 2 hours for you, then it's fine, right? The first thing that you should be noticing and you should be focusing on is, are you able to understand the particular set, right? So we will be doing this only in today's class, and I hope like that till the end, when till the time we will be reaching the end of the class, then we will be able to do that, right? So the first important thing that I just told you in arrangements or in LR as a whole is the language. The language major role, right? Okay, Karthik is asking something else. Does option help in solving LR sets? Yes, Karthik, like in some of the sets they might help, in some of the sets they might not help, right? So there are also theta type sets that are there. So yes, we will be targeting every kind of question. So let's just begin with the theory part first, right? So the thing that we know for sure is the language plays a major part in this. If someone is not able to recognize the handwriting, then I am a bit sorry for that. I'll try my best to write in a like readable writing. Okay. So the first thing first, if I'm saying that let's say A is sitting to the left of B, right? So I have two kind of statement, left or right. If I say A is sitting to the left of B, A is sitting to the right of B, right? Then I have away. What is away? Away can be left or right. Okay, and the second thing that we have is immediate left and immediate right. And for this we also have a word neighbor, right? Neighbor means immediate left or immediate right. Okay, so if I'm saying A is to the left of B, right? Let me put it in a question. If I'm saying A is to the left of B, and now if I ask you how many people are in between A and B, are in between A and B, can you guys give me the answer quickly, like 5 seconds, quickly the answers. Okay, so A is sitting to the left of B. What I know for sure, A is to the left of B, but it might be that A is immediately to the left of B. There is one person between A and B. There are two persons between A and B. There are three persons between A and B. So the answer to the question is we can't say, right? We can't say. If I am saying A is to the left of B, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि A B के लेफ्ट में बैठा है. जैसे कि अगर मैं कहूं कि तुम्हारे घर से अगर राइट डायरेक्शन में जाओ तो परचून की दुकान आती है, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे घर से एकदम लगी हुई परचून की दुकान है. हो सकता है कि 1 किलोमीटर जाना पड़े, 2 किलोमीटर जाना पड़े. जैसे मेरे घर से अगर तुम नॉर्थ में बढ़ो तो जम्मू कश्मीर आ जाता है, तो मेरा घर कोई जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे नहीं है, राइट? तो वो कितनी भी दूर हो सकता है, ऐसे ही लेफ्ट में ऐसे ही राइट में, राइट? व्हेन आई एम सेइंग, अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे बदल दूं, इसका आंसर देना, ए इज
3 places. A is 3 places to the left of B. अब बताओ how many people are in between? 2. देखो भाई ऐसे बोलना नहीं होता है, तो यू आर गिविंग अ स्पॉइलर टू एवरीवन, ठीक है? तो डू मैसेज मी. ओके, सो इफ देयर आर 3 प्लेसेस, तो आई विल से बी के लेफ्ट में एक प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, ठीक है? तो थर्ड प्लेस पे ए है, तो बीच में मेरे पास कितने लोग हैं? आई हैव 1 प्लेस हियर एंड आई हैव 1 प्लेस हियर, सो देयर विल बी 2 पीपल बिटवीन ए एंड बी. हमेशा याद रखना, n प्लेसेस टू राइट या लेफ्ट या फिर अवे, we will always be having n minus 1 people in between, n minus 1 people in between, right? So I think अभी तक कूल चल रहा है, आसान आसान चल रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या है. शायद किसी को ऐसा भी लग रहा हो कि ये तो बहुत बकवास चल रहा है, ये तो पता ही है हमको. So पता है सबको, अभी तक इतना पता है. Now I am giving you a condition, and this condition will follow most of the questions that we will be covering in today's class. ठीक है? ओके, तो द कंडीशन इज लाइक दिस. इसको समझ लो. अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है कंडीशन का तो ले लो, क्योंकि आगे पेज स्क्रॉल हो जाएगा, ये कंडीशन ऊपर चली जाएगी. सो देयर आर 7 people in a row, 7 people in a row, ठीक है? A and B are among them, right? Find the number of possible values in which A and B can be seated. सो है क्या क्वेश्चन? देखो, मेन स्टेटमेंट आपकी ये है कि 7 लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हैं, ठीक है? एक सीधी कतार में बैठे हैं 7 लोग, जिनमें से ए और बी, उन्हीं में से 2 हैं, मतलब ए और बी के अलावा 5 लोग और हैं, ठीक है? तो हमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है जिसमें ए और बी बैठ सकते हैं अलग अलग अरेंजमेंट्स के हिसाब से. और आगे है कैन बी सीटेड सच दैट, ठीक है? एंड नाउ आई विल बी गिविंग डिफरेंट कंडीशंस. अब इसके ऊपर क्या है, तो वी विल बी नाउ कवरिंग different statements that we actually see in a LR set, a set of arrangement or maybe double lineup or maybe anything like that. So हम अलग अलग सेट्स के हिसाब से अलग अलग स्टेटमेंट देखेंगे और हर स्टेटमेंट से कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है? सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, और ऑब्वियसली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा. तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको काफी आसान लगे, बहुत अच्छी बात है. अगर एंड तक आपको आसान लगता है तो मतलब इट्स ग्रेट. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज each of them has exactly one neighbor. Each of them has exactly one neighbor. In how many ways can they be seated? सर ईच ऑफ देम सेपरेटली होगा या टुगेदर? टुगेदर ना यार, टुगेदर. each of them have one neighbor, तो सेपरेट का कोई मतलब नहीं है. ओ, 2 टाइप्स, मतलब 2 वेज. ऐसे भाई, ऐसे ये दूसरी बार हो रहा है कि तुम सबको स्पॉइलर दे रहे हो. आई डोंट नो इफ इट्स राइट और नॉट, बट ऐसे मत करो, सबको ट्राई करने दो. ओके, तो हमारी जो बात हो रही है दैट इज ऑफ एग्जैक्टली वन नेबर, तो सिर्फ एक नेबर चाहिए.
So I have how many people? I have 7 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. So एक नेबर कब होगा? ऑब्वियसली जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठा हूंगा तभी मेरे पास एक नेबर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए को बैठाऊं और यहाँ पे मैं बैठाऊं बी को, तो ए के लेफ्ट में कोई नहीं है, सिर्फ राइट में है, और ऐसे बी के राइट में कोई नहीं है, सिर्फ लेफ्ट में है। तो वन अरेंजमेंट इज दिस and second arrangement will be obviously this. So how many arrangements I have? I have 2 arrangements. ठीक है, तो आंसर इज नथिंग बट 2. गुड गुड गुड, अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। ओके, सेकंड पार्ट, A is 2 places to the left of B. A is 2 places to the left of B. Okay, waiting for answers. Okay, we got an answer from Karthik. Karthik says 5. Okay, we have a one of the option as 5. Shreya also says 5. Others, come on, fast. Okay, Aarti says 5. Karthik says 5. Okay, so let's just start. We have how many guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So A is 2 places to the left of B. So if A is here, how many people will be in between? 2 places to the left, then one guy in between. So B will be here. Or what can happen is A here, B here, A here, B here, A here, B here, and A here, B here. So how many possibilities? 1, 2, 3, 4, 5. How many possibilities we have? We have 5 possibilities. Right. Good. So now moving on to the next, leveling it up. Okay. A is 3 places away from B. A is 3 places away from B. Okay, so I have an answer from Prakhar. That is option A, and Prakhar says 8. Karthik is also replying. Karthik both says 8. Okay. Anything else? Shreya is also saying 8. Okay, so let's just do this. Most of you are saying 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 people. A is 3 places away from B. So A might be here. 3 places means 2 guys in between, and B is here. Right. So A can come here and B can come here. A can come here, B can come here, and A can actually come here and B can come here. So this is what is happening. Right. So okay. Now, so these are 4 possibilities, but what I have is I have the word away. Away means both left or it may be right as well.
सो मे बी लेफ्ट मे बी राइट। सो 4, तो ऐसे ही 4 ऑप्शंस बन जाएंगे जब बी पहले और ए बाद में लिखा होगा। आई विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस एज वेल, कि बी यहाँ, ए यहाँ, इसकी जगह बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे। So I will be having 4 into 2, that is 8 ways. You guys are going good, so I will be increasing the level soon. ठीक है? Okay. Now the number of people to the right of A is equal to the number of people to its left. The number of people to the right of A is equal to the number of people to its left. Okay, so Karthik says 1. We have one option as option A as 1. Aarti also says 1. Prakhar says 1. Kartikeya says 1. Okay, so it looks like the answer is 1. Rohan also says 1. Okay, so let me just do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ए के बारे में बताया है कि ए से जितने लोग राइट में हैं उतने ही लोग लेफ्ट में हैं, मतलब ए की पोजीशन फिक्स्ड है, दैट इज इन द सेंटर, ए इज हियर, राइट। ओके, नाउ इफ आई गो बैक टू माय क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था, इफ आई गो बैक टू दैट, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज इन हाउ मेनी वेज ए एंड बी कैन बी सीटेड, राइट। ए के लिए तो मैंने एक जगह फिक्स कर दी, लेकिन क्या बी के लिए जगह फिक्स है? बी कैन बी हियर, दिस इज वन अरेंजमेंट, बी कैन बी हियर, सेकंड बी कैन बी हियर, थर्ड बी कैन बी हियर, फोर्थ बी कैन बी हियर, फिफ्थ बी कैन बी हियर, सिक्स्थ. So there will be actually 6 possible conditions where we can place B, and all the arrangements are different. So I'll say it has 6 ways and not 1. देखो कहाँ स्ट्राइक किया तुमने, बस ये सोचा अरे राइट और लेफ्ट में, मतलब ए तो आ गया बीच में, और जैसे ही हमने सोचा कि ए बीच में आ गया, हमारा ध्यान ही नहीं गया कि भाई उसने तो ए और बी के कॉम्बिनेशन में पूछा था, ठीक है, कि ए एंड बी के कितने अरेंजमेंट्स होंगे। सो द आंसर इज 6 एंड नॉट 1. आई होप समझ में आया कि कहाँ गड़बड़ कर रहे थे। आया तो बताओ, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बताओ, अगर दोबारा समझाना है तो बताओ, दोबारा समझाते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ पीपल टू द राइट। Okay, Rohan is asking, sir, could you explain how exactly will the question be on it? So, Rohan, it might be like कि आपसे एक पूरा आपके पास सेट दिया हो, उसके अंदर एक जगह आपसे ऐसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन। इट माइट बी पॉसिबल जैसे एलआर का जो सेट आता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऐसी दे रखी हो कि द नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, एक स्टेटमेंट हो, जैसे 7 स्टेटमेंट दी है जिससे आपको एक अरेंजमेंट पूरा बनाना है, उनमें से एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है। सो इफ यू कैन इंटरप्रेट द स्टेटमेंट राइट, ऑब्वियसली आप एक राइट अरेंजमेंट बना पाओगे। अगर आप स्टेटमेंट को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो या फिर पूरा इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई केस मिस कर जाओ, ठीक है। ओके, तो ऐसा था। अब क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, द नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, तो ए के राइट में जितने हैं उतने ही ए के लेफ्ट में हैं। ये स्टेटमेंट पढ़ते ही हमारे दिमाग में सीधा बात आती है कि ए बीच में है, ठीक है। बट अवर क्वेश्चन वाज, क्वेश्चन क्या था, अगर मैं ऊपर जाऊं और क्वेश्चन देखूं, सो थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट एंड दिस. So the question was, there are 7 people in a row, A and B are among them, find the possible values in which A and B can be seated. So it is asking about the arrangements. We need to arrange both A as well as B.
ठीक है, तो ए और बी दोनों अरेंज करने हैं हमें, हमें कोई एक अरेंज नहीं करना है। अभी हमने यहाँ पे क्या करा, ऊपर देखो हम दोनों को अरेंज करके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसने जैसे ही हमें हमारा फोकस स्टेटमेंट ने सीधा ए के ऊपर लेकर आया, तो हमने ए को फिक्स किया एंड वी सेड की ओनली वन पॉसिबल कंडीशन कि ए बीच में होगा। ट्रू कि ए के लिए एक ही कंडीशन है कि ए बीच में होगा, लेकिन ए और बी के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, बी तो कहीं भी हो सकता है, बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो बी माइट कैन बी एनीवेयर, और इसीलिए वी कैन हैव एक्चुअली 6 वेज ऑफ अरेंजिंग ए एंड बी, राइट। आई थिंक, आई होप अभी क्लियर है। ओके, हाँ, तो एक्चुअली स्टेटमेंट का पर्पस ही ये था कि तुमको बी के बारे में भुला दे, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द फिफ्थ स्टेटमेंट। सो फिफ्थ स्टेटमेंट इज नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ ए is equal to number of people to the left of B. So number of people to the right of A is equal to the number of people to the left of B. तो A के राइट में जितने हैं उतने B के लेफ्ट में हैं। नाउ फाइंड द पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग देम। Okay, Karthik says 6. So we have one of the option as 6. Waiting for others to answer. Misbah came late. Now Misbah answer the question. Rohan says 6. Okay. Karthik also says 6. Shreya, waiting for your answer as well. Okay, Shreya says 2. Karthik says 3. So we have a 3, we have a 2. Okay, now let's just check it out. So I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. So जितने A के राइट में है उतने B के लेफ्ट में है. So if I place A here, if I am placing A here, so to the right of A I have 6. So I need to place B here. To the left of B there will be 6. Right. So one arrangement, if I place A here and B here, I can place A here and I can place B here. Right. Now if what I do is, if I place B here and A here, so to the left of B I have how much? I have 1 and 2. To the right of A I have how much? 1 and 2. Means this particular case is also possible. So obviously if this is possible, I can do this as well, right? So to the right of A, if I see there is only 1, to the left of B there is only 1, and obviously this as well. So to the right of A there are 0 and to the left of B there are also 0. So how many cases? 1,
2, 3, 4, 5, 6. So 6 will be the correct answer. Right. I hope आप लोगों को समझ में आया how 6, why 6. अगर आया तो बताओ, आगे बढ़ें, और अगर नहीं आया तो बताओ, फिर से बताएं. बता दो, कुछ तो बता दो. शुड आई मूव फॉरवर्ड और शुड आई रिपीट दिस? क्या करें? समझ में आया? यस और नो? यस. ओके. ठीक है. तो now I am moving on to the another part, that is the sixth part. So a statement might be like A is sitting to the left of B. A is sitting to the left of B. अब I know that ये statement हर कोई सही interpret करेगा, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है. But what I want to know is क्या तुम actually number of ways ठीक से निकाल पा रहे हो? क्योंकि स्टेटमेंट इंटरप्रेट करने में गलती नहीं होगी, यहाँ पे जो भी गलती होगी वो नंबर ऑफ वेज निकालने में होगी. तो लेट्स चेक इट आउट. क्या आप सही से निकाल पा रहे हो या नहीं? आंसर बताओ इसका फटाफट. Okay, Karthik is saying 15, 15. 21, 11. So I have 15, 21, 11. I am happy to see a variety here. और कोई आंसर देना चाहता है? Anyone wants to answer? एक एक श्रेया आपका आंसर नहीं आया. Like मैं तो कुछ सबके आंसर आने चाहिए ना यार. If I have like 10 students, 12 students attending the class, तो हर एक का आंसर आना चाहिए. भाई गलत है. कितना गलत आएगा? बहुत गलत आएगा. इससे ज्यादा क्या होगा? आंसर तो दो. आरती is saying 15. Okay. चलो निकालते. अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो A is sitting to the left of B. ठीक है. अब अगर B is sitting here, तो A कहाँ कहाँ बैठ सकता है? A can be anywhere. A can be anywhere among all this, right? So A has 6 ways, so I will be having 6 ways here. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now if B is sitting here, so A can be anywhere among these. So A have now 5 places, so I'll have 5 ways here. Right. Now
1 2 3 4 5 6 7. Now if B is here, A can be anywhere among these four, so I'll have four ways here. So now you can actually predict what this is going to be. This is going to be three ways, then two ways, then one way, right? Or I need to add all this up. So if you will be adding 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, what you will be getting is you will be getting 21 ways. जिसको लगता है कि इतनी जल्दी कैसे ऐड करें, वो यहाँ पे देख लो. 6 plus 1 7, 5 plus 2 7, 4 plus 3 7. So 7 3s are 21. I will be having how many ways? 21 ways. So 21 is the correct answer. I would love to know how many of you are getting 15 as the answer. So how come 15? Like क्या गलती करनी पड़ रही है हमें 15 लाने के लिए? कोई भी बता दो जिसका 15 आया है. ओके, कार्तिक मार्क्स 6 places instead of 5, तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 हुआ. श्रेया, what you did? श्रेया बता दो. सिक्स बॉक्सेस. ओके, तो अगर 6 बॉक्स रखते हैं तो वो आएगा. ठीक ठीक ठीक. ओके, सो अब अगर मैं अगली बार जब मैं किसी और क्लास में ये काम कराऊंगा और बच्चों का 15 आएगा, तो मैं पहले से प्रेडिक्ट करके हीरो बन सकता हूँ कि तुमने 6 बनाए होंगे 7 की जगह, जरा चेक करो करके. थैंक यू. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट. सो अब जो है मामला थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा. एंड नाउ व्हाट वी रिक्वायर इज मोर देन कैलकुलेशन, कि आप सारे केसेस ढंग से बना पाओ. सो नाउ वी आर एक्चुअली मूविंग टू द रियल गेम. ठीक है. 7th part is another person C. Another person C is sitting exactly between A and B. Another person C is sitting exactly in between A and B. बताएं आंसर्स. कार्तिक ने हंसना स्टार्ट कर दिया है. Okay, so I'm getting an answer as 10. चलो ठीक है. अब नहीं कार्तिक, आप एक्चुअली अपनी तरफ से कंडीशंस नहीं लगा सकते. तो कंडीशन सिर्फ उतनी है जितनी मैंने क्वेश्चन में दी है. सो यू नीड टू आंसर अकॉर्डिंग टू दैट. चलो मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ. आई विल गिव यू वन मोर ट्राई. 10 इज नॉट द राइट आंसर. 14 इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर. सो 10 और 14 आंसर नहीं है. बट आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई, बिकॉज 10 आंसर आएगा पर एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आएगा. देयर आर अदर सिनेरियोज एज वेल जो कि पॉसिबल होंगे. इन द सिमिलर केस आरती सेड 6 इज ऑल्सो आंसर बट ऑफ अ पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो 10 is also answer of a particular case, 6 is also answer to a particular case. Now you guys know
that either the answer is 10 plus 6 that is 16 or more than 16। ठीक है, तो ये दो केसेस तो हैं, पक्का है। तो या तो आंसर 16 है या फिर 16 से ज्यादा है। ओके, तो वन ऑफ द ऑप्शन दैट आई एम गेटिंग इज 24। मैं एक ऑप्शन तो खुद ही लिख देता हूँ, दैट इज 16। दो ऑप्शंस और बचे हैं, बताओ, सोचो क्या क्या हो सकता है। आई हैव वन आंसर एज 14, मतलब ये तो मैंने अभी बताया ही था कि 16 से ज्यादा होगा श्रेया, तो 10 प्लस 6 16 से ज्यादा होगा, बिकॉज 10 is the answer to a particular case, 6 is also answer to a particular case, बट जो हमने दिया है दैट विल इंक्लूड 2 और मोर देन 2 केसेस, तो आंसर विल बी 16 और मोर देन 16। okay, so the D option is none of these. So let me now do this for you. अब हमारे पास जो केसेस हैं तो देखते हैं क्या करके। सो नाउ आई हैव केस 1। सो केस 1 इज जो कि आप सब लोगों ने लिया, व्हेन A C B विल बी सिटिंग लाइक दिस। सो आई हैव 1 2 3 4 5 6 7। So they might be sitting at this place, that is number 1. They might be sitting at this place, that is number 2. They might be sitting at this place, that is number 3. They might be present at this place, that is number 4. And they might be present at this particular place, that is number 5. So 5 ways, and obviously they can set B C A। अभी भी क्या है, C is exactly in between A and D, so I have 5 into 2 that is 10 ways। so ये 10 ways आंसर तब आया जब हमने ऐसे किया, और ऑब्वियसली आप सब लोगों का, ज्यादातर लोगों का 10 ways तो आंसर आ ही रहा था, तो मोस्ट ऑफ यू हैव कंसीडर्ड दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, दिस पर्टिकुलर केस। सो नाउ इफ आई हैव लाइक केस 2, ठीक है, आई हैव नाउ केस 2, तो केस 2 माइट बी लाइक इफ आई से A then a gap then C then a gap then B। तो अगर मेरे पास ऐसा एक केस है तो क्या C अभी भी एग्जैक्टली इन बिटवीन A एंड B है? हाँ बिल्कुल है, तो C इज एग्जैक्टली इन बिटवीन A एंड B। सो 1 2 3 4 5 6 7। So now what they might do is they are actually occupying 5 places एक बारी में, so that is A here, B here and C here, right? So they can move one step forward, so one condition will be from this place to this place, another condition will be up to this place from this place, that is 2, and the last condition will be from this place to this place, that is 3। और जैसा कि सबको पता है, other possible case may be C and B, C and A, so I'll say 3 into 2 that is 6 ways, 6 ways here, ठीक है। नाउ इफ आई कम टू केस 3, अब जैसे कि केस 2 बना लिया है तो कई लोगों के दिमाग में केस 3 पहले ही आ गया होगा कि क्या बन सकता है। सो इफ आई से केस 3 इज A double dash C double dash B, so how many places are they occupying? They are 1 2 3 4 5 6 7, so they are occupying all the 7 places, so it will be like this, right? So one particular case, another particular case can be like this, so there are 2 ways। अगर मैं ऐसे देखूं तो 10 वेज यहाँ पे, 6 वेज यहाँ पे 16, और 2 वेज यहाँ पे, तो 16 प्लस 2 इज 18। सो आई हैव हाउ मेनी वेज? आई हैव 18 वेज। तो मैं 18 तरीके से ये पर्टिकुलर सिनेरियो को देख सकता हूँ। अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, आइडिया बनने लगा होगा कि अगर मान लो एक ऐसा ही एक तुम्हारे पास एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर 6 अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं और उनमें से कोई एक पॉइंट है दैट C इज एग्जैक्टली इन बिटवीन A एंड B, तो अगर तुम्हारा आंसर 10 है तो मतलब तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ एक यही केस चल रहा है, ठीक है। यू आर नॉट इवन कंसिडरिंग द केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तो अगर ऐसे होगा तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि यार हम कितने भी जो है सेट्स प्रैक्टिस कर लें, पर अगर ये वाली स्टेटमेंट हम पहली बार जब भी सुनेंगे तो हम अटक जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देयर आर लॉट मैनी स्टेटमेंट्स, तो उसी चीज को यहाँ पे इस क्लास के अंदर एकदम तुम्हें प्रो बनाने की उसी के ट्राई कर रहा हूं मैं कि तुम सारी स्टेटमेंट्स को हर तरीके से देख पाओ, हर तरीके से सीख पाओ।
In the next class, yes, we will be talking about how to connect different statements. तो हम एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है. I hope this particular question is clear, this particular part is clear, so that we can move forward to another part. Aarti, is my screen visible? Yes, great. Okay. ठीक है, तो ये वाला सही है, आगे बढ़े. Should we move forward? Okay. तो अब मेरे ख्याल से which statement is now I am having, how many have we done? So we are done with 7. So now the eighth statement. Okay, so the eighth statement that I can have is, if A and B interchange their positions, each of them will have exactly one new neighbor. Each of them will have exactly one new neighbor. तो अगर A और B इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, तो each of them will have exactly one new neighbor. ठीक है, बताओ इसका आंसर. Okay, so I have few answers. 6, 2. Okay, to Shreya and Karthik, the answer to this particular option is a two-digit number. This is the hint that I can give. Karthik says 10. Okay, मिसबा को थोड़ी दिक्कत हो रही है. मिसबा, you came actually थोड़ा late. मैं 4-5 statement